topic which we are discussing, then type it in your text box, chat box. We'll discuss it on. We'll have a discussion on it then. First of all, as our subject name is international business, what is an international business? The first question we have in our mind is, what is an international business? International business is the process of focusing on the resources of the globe and the objectives of the organization on the global business opportunities and the threats. तो international business का क्या मतलब है कि we focus on the resources which are available in the outside world. Like we are working in country A and country B has more resources and which are available at a low cost. ठीक है, तो then we'll focus on that country for our benefit, for the business opportunities that country B offers to us. International business is defined as a global trade of goods and services or an investment. International business क्या है? It's a global trade wherein we are exchanging goods and services or investments. It involves transactions that are devised and carried out across national borders to satisfy the goals of individual companies and organizations. So basically, international business का meaning क्या है? We are doing a trade across borders. मतलब we are not only confined to our host country or a country where we are originated or where we are working. We are spreading our branches, or we are exploring the opportunities which are available in the outside world, in the countries, in the other countries. Now, why international business is important? Because international business helps to achieve international business helps to achieve higher profits by expanding the production capacity, accessing new technologies, and increasing the market share. जब इंटरनेशनल बिजनेस, जब हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर हमारे किसी और कंट्री में हमारे गुड्स एक लोअर कॉस्ट पे या फिर हमारा रॉ मटेरियल लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल है, अगर हम वहां से अपना रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं, देन इट विल लीड टू अ हायर प्रॉफिट्स. ठीक है, एंड अगर हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, देन वी विल बी एबल टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी. बाकी कंट्रीज में बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो सकती है फॉर द प्रोडक्शन, जिससे हमारा मार्केट शेयर भी इंक्रीज होता है. These are the main basic benefits of the international business. And international business करने के लिए one of the main thing is a trade barriers. ठीक है, जैसे trade barriers are the restrictions which are put on by the other countries for doing a trade with their countries. As the trade barriers fall and the communication and the transportation cost decreases, the importance of international business continues to grow, offering companies and countries new avenues for the growth and development. This means जैसे जैसे trade barriers कम होंगे, हमारी cost, manufacturing cost या फिर cost for importing or exporting, it will decrease. ठीक है, जिससे हमारे business पे positive impact आएगा, जिससे then further on companies and the country will be benefited with that fall in trade barriers and improved in cost efficiency. Then these are the main few points which indicates the importance of international business. The first point is it acquires more sales. जैसे ही हम किसी new market में tap in करते हैं, तो it increases our sale volume. जैसे if I am doing a trade in India, फिर मैंने सोचा I'll do a trade in Nepal also. ठीक है, then my target audience will increase, my target market will increase, which will ultimately leads to having a more sales volume. Second is it opens new opportunities, which means that if I'm doing a trade in India, I'll then I move to then I move to go trade in Nepal. Then this will give me more opportunities in the form of the new market that I can explore. एंड उस मार्केट में डिफरेंट डिमांड्स हो सकती है, जिसकी वजह से मैं अपने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकती हूँ टू केटर टू दैट न्यू मार्केट. इट गिव्स अ न्यू टेक्नोलॉजी. जैसे अगर मैं इंडिया में ट्रेड कर रही हूँ एंड देन आई फोकस ऑन ट्रेडिंग माय प्रोडक्ट इन दुबई, एंड it's providing me a new technology where I can make my product at a lower cost. ठीक है, तो it's another importance of international business कि ये synergy create करता है by mixing the technologies of the two countries. It utilizes the resources.
कैसे कि जब मैं अपनी कंट्री के रिसोर्सेज तो यूज कर ही रही हूँ, बाय डूइंग अ इंटरनेशनल बिजनेस मैं दूसरी कंट्री के भी रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ. इट प्रोवाइड्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट्स कि अगर मेरे को बेटर कॉस्ट पे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, देन आई विल बी एबल टू मेक अ मोर क्वालिटी प्रोडक्ट. इट्स हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज कैसे अर्न करेंगे? बाय डूइंग अ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रांजैक्शंस, बाय डूइंग अ ट्रेड विद अदर कंट्रीज. The last one is it requires investment in infrastructures. अगर मैं एक कंट्री ए में ऑपरेट कर रही हूँ, then I decided to establish my production facility in country B. ठीक है, अब उस प्रोडक्शन फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए आई नीड एन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, मैं पूरा सेटअप फैक्ट्री सेटअप करूंगी वहां पे. सो आई एम मेकिंग अ पेमेंट, आई एम मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ द अदर कंट्री. ठीक है, इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. सेम इज द थिंग, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कोई कंट्री बी का मैन्युफैक्चर हमारी कंट्री में आके स्टैब्लिश कर रहा है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. These are the main important points which indicates the importance of international business. Then अब इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए व्हाट कुड बी अ मोड, हाउ, मतलब मैं कैसे दूसरी कंट्री में जाके ट्रेड कर सकती हूँ, व्हाट आर द पॉसिबल वेज. Then first one is the export. Till now, anyone has any doubt? Please write it in chat box. Okay. Then we'll discuss. Then we move on. We'll discuss mode of entry. मोड ऑफ एंट्री क्या इंडिकेट कर रहा है? हाउ आई कैन डू अ बिजनेस इन अदर कंट्रीज. ठीक है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वेज जिससे मैं दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस कर सकती हूँ. तो फर्स्ट कुड बी एन एक्सपोर्ट. ठीक है, एक्सपोर्ट में क्या होता है? एक्सपोर्ट इन्वॉल्व द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. एक्सपोर्ट का बेसिक मीनिंग क्या है कि मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स का ट्रेड कर रही हूँ. जैसे इफ इन इंडिया में आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स. ठीक है, उस टेक्सटाइल मटेरियल को मैंने दुबई में एक्सपोर्ट कर दिया. ठीक है, दिस इज द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स. एक्सपोर्टर, अब इस केस में क्या होता है? एक्सपोर्टर, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ, आई कैन डू इट इन अ डायरेक्ट वे. आई कैन हैव अ कॉन्टैक्ट विद समवन इन दुबई और डायरेक्टली मैं उनको अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर सकती हूँ. और आई कैन डू इट विद द थर्ड पार्टी, कि मैंने किसी एजेंट को हायर किया एंड थ्रू दैट एजेंट मैं दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही हूँ. तो एक्सपोर्टर कैन बी डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स or exporting in their own name, or it can be an indirect exporter supplying to the other exporters. ठीक है, exports allow companies to expand beyond their domestic market and access a new customer globally. export में हमें क्या मिल रहा है? हम अपनी अपनी नॉर्मल डोमेस्टिक मार्केट को तो केटर कर ही रहे हैं. वी आर फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ आवर इंटरनल मार्केट. फिर उसके बाद बाय एक्सपोर्टिंग माय प्रोडक्ट मैं फॉरेन मार्केट्स को भी केटर कर रही हूँ, जहाँ पे मेरे को न्यू कस्टमर अवेलेबल है. ठीक है, और वो न्यू कस्टमर की न्यू डिमांड्स भी हो सकती है, जिसकी वजह से मैं अपने प्रोडक्ट को और डाइवर्सिफाई भी कर सकती हूँ और अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी भी बना सकती हूँ इफ दैट इज प्रॉफिटेबल टू मी. ठीक है, एनी डाउट इन एक्सपोर्ट? Okay, Lavanya has asked me to explain it again. एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या है कि अगर मैं डोमेस्टिक मैं एक प्रोडक्शन यूनिट हूँ. ठीक है, मैं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, लाइक आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ टेक्सटाइल मटेरियल. ठीक है, अब मैं सूट मैन्युफैक्चर करती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल. ठीक है, वो सूट मैं इंडिया में तो सेल कर ही रही हूँ. ठीक है, उस सूट को मैं एक्सपोर्ट करके दूसरी कंट्री में भी सेल कर रही हूँ. लाइक कि मैंने इंडिया में सूट मैन्युफैक्चर किया, मेरी प्रोडक्शन फैसिलिटी इज इन इंडिया, बट मैं वो मैन्युफैक्चर करके उस प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंट्री में भी सेल कर रही हूँ. दैट मीन्स एन एक्सपोर्ट. इट मीन्स अ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फॉरेन कंट्री. Lavanya, now you got it? Okay. Then we move to our next strategy.
next mode of entry, which is licensing and franchising. अब licensing में क्या होता है? Licensing is an agreement where the licensor grants the licensee the right to use their brand, technology or intellectual property in exchange for a fee. लाइसेंसिंग में क्या है? मेरी एक प्रोडक्शन यूनिट है इंडिया में, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है। मैंने किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में किसी एक दूसरे मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट में एंटर किया कि आप मेरा ब्रांड नेम यूज कर सकते हो, लाइक माय ब्रांड नेम इज एबीसी इन इंडिया, ठीक है। वो एबीसी ब्रांड नेम यूज करके एक दूसरा मैन्युफैक्चरर फॉरेन कंट्री में मेरे ब्रांड नेम से अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है, दैट बिकॉज में हम दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अग्रीमेंट टू यूज माय टेक्नोलॉजी, माय ब्रांड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और उसके बदले में व्हाट अ लाइसेंसर गेटिंग, इट विल गेट अ फी। एक पर्टिकुलर अमाउंट वो दोनों डिसाइड करते हैं, बोथ द पार्टीज डिसाइड अ पर्टिकुलर अमाउंट, जिसके बेसिस पे वो उसको अलाउ करता है टू यूज इट्स ब्रांड, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। फ्रेंचाइजी भी थोड़ा सिमिलर सा है, बट फ्रेंचाइजी में क्या है कि licensing के केस में आई एम जस्ट अलाउइंग the other party to use the brand, technology, intellectual property, but franchising के केस में I am also helping them to establish a proper facility there, ठीक है। franchising is a more involved form of licensing where franchisor provide extensive support and control to the franchisee, ठीक है। मतलब मैंने उसको मैं पूरा एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करूंगी, फर्दर एस्टैब्लिशमेंट के बाद देन आई गिव अ कंट्रोल टू द फ्रेंचाइजी टू ऑपरेट दैट यूनिट। एनी डाउट इन लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग? Okay, moving on. Our next mode of entry is foreign direct investment. Foreign direct investment को FDI भी बोलते हैं in a short form. FDI कैसे होता है? It occurs when a company invest resources to establish an operation or acquire assets in another country. For FDI क्या है? FDI में मैं एक लमसम अमाउंट किसी फॉरेन कंट्री की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती हूँ। FDI allows firm to gain a greater control and reap more of the benefit of international expansion. FDI में जैसे अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने किसी दूसरे कंट्री बी में एक ABC कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। बाय इन्वेस्टिंग लाइक आई एम देयर शेयर होल्डर, ठीक है। तो इफ आई एम देयर शेयर होल्डर, आई हैव अ कंट्रोल इन देयर डिसीजन मेकिंग, जिससे मैं उनकी कोई भी उनका प्रोसेस है, उनका ऑपरेशनल प्रोसेस है, आई कैन हैव अ कंट्रोल ऑन इट, ठीक है। by FDI I can by FDI I'm doing an investment in a foreign companies companies of the foreign country. Moving on, next is a contract manufacturing. As the name suggests, contract manufacturing is the strategy of identifying a manufacturing unit to produce item at the competitive price in any part of the world. Contract manufacturing में क्या है? मैं एक country A में operate कर रही हूँ, ठीक है। My company name is ABC, ठीक है। अब मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये वाला प्रोडक्ट इंडोनेशिया में लोअर कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? आई मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद सम मैन्युफैक्चरर इन इंडोनेशिया, ठीक है। और उसको मैंने बोला आई गिव यू सम मनी इन एक्सचेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग माय प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें मैंने किसी फॉरेन मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया फॉर मैन्युफैक्चरिंग माय प्रोडक्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल इज अ नाइक. नाइक इज प्रोक्योरिंग इट्स एथलेटिक फुटवेयर इन अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया. इसमें क्या किया है? नाइक ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराई है. क्यों कराते हैं? व्हाई इट इज बेनिफिशियल टू द फर्म? बिकॉज ऑफ द इट्स लो कॉस्ट. Then there is a contract marketing. In this, it's little similar to the contract manufacturing, but in this, firm is not outsourcing their manufacturing activities. In this, they are outsourcing their marketing activities. All the companies which are strong in production may not have an equal marketing strength. Such manufacturing units enter into a market agreement and concentrate more on production at a lower cost.
ठीक है. Is in this case company are doing their manufacturing themselves, but they are outsourcing their marketing activities. Then are the management contracts. Management contracts में क्या होता है? It's an agreement between the two companies whereby one company provides managerial and technical assistance for which proper monetary compensation is given, either as a flat lump sum fee or as a percentage of the sale or a share in the profit. इसमें क्या है? Management contracts में दो company है, like there is company A and company B. उन दोनों कंपनी में अलग अलग अपने अपने एक्सपर्टीज है. लाइक वन इज एक्सपर्ट इन डूइंग अ मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर वन इज एक्सपर्ट इन डूइंग अ फाइनेंसिंग एंड मार्केटिंग एंड रेजिंग अ फंडिंग. ठीक है. Then these two companies A and B come in agreement with each other कि they will help each other, like they will create a synergy effect, they will help each other. एक कंपनी उसको मैनेजरियल टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कर देगी इन एक्सचेंज ऑफ देयर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन. Any doubt in these three mode of entries? Okay. Then another one is a joint venture. Joint venture is a binding contract between two venture partners to set up a project either in a home country or a host country or a third country. Joint venture में क्या है? दो companies हैं, to A and B, they have a contract with each other कि हम एक project बना करेंगे. Together they'll work on some project. ठीक है. अब वो प्रोजेक्ट कहीं भी हो सकता है, या तो कंट्री ए की कंट्री में, कंपनी ए की कंट्री में हो सकता है, या फिर कंपनी बी की कंट्री में हो सकता है, और या फिर किसी एक थर्ड कंट्री में हो सकता है. इन दिस केस both the parties are committed to joint risk taking and joint profit sharing. अगर they are together working on some project, तो वो क्या करेंगे? They will share their profits, they will share their risk. Whatever the risk involved in the project, they will share it. इसका एग्जाम्पल है, Taj Group of the hotels has a joint venture in Russia for setting up the 5-star hotels. And next one is the Mahindra and Mahindra has recently entered in a contract joint venture with the Renault to manufacture cars. ठीक है. Then there is a collaboration. Collaboration में क्या है? While a joint venture deals with the project in totality in financial terms and the proportionate partnership commitment, collaboration deals only with the functions. Joint venture में क्या है कि एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बट कोलैबोरेशन में एंड इन जॉइंट वेंचर मैं उसके साथ उस प्रोजेक्ट में फुली इन्वॉल्व हूँ. आई एम इन्वॉल्व इन द रिस्क टेकिंग, आई एम इन्वॉल्व इन द प्रॉफिट शेयरिंग. बट कोलैबोरेशन में क्या है? आई एम हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट with the other companies for only a specific function. ठीक है. For example, Bajaj Auto has a technological collaboration with Vasky of Japan, which offers the technology for two-wheelers. Other well-known technology collaborations are the India Suzuki, Kinetic Honda, and Hero Honda. मतलब these are the strategic collaboration for a particular किसी function के लिए I am doing a collaboration with the other companies. Then there is a merger and acquisition. Merger and acquisition में क्या है? The company in the host country selects a foreign company and merges itself with it. मतलब मैं company A हूँ and I am operating in a country A and I identify some companies in country B which are similar to a work I am doing. Then मैं क्या decide करती हूँ? That I'll merge my company with that company to have a more economies of scale. ठीक है. And to have access to the foreign markets. Foreign company acquires the control of the ownership. This mode of entry gives an outstanding competitive edge over others. इस केस में क्या है? I'm not doing with the trade with the company in other country. मैंने क्या किया है? उस company के साथ merge ही कर दिया. Then we'll form a new company. Like a company, there is company A in country A. And there is company B in country B. ठीक है. दोनों को A and B दोनों merge हो गए and they'll create some new company that is C. For example, Procter and Gamble entered Mexico and became a leader in 5 years by acquiring Loreto. Tata Bearing acquired Metal Box in India. It's an easy and a fast method since the cost of acquisition is comparatively low. इसमें मैं क्या कर रही हूँ? न्यू कंपनी को
एक्वायर कर रही हूँ या फिर उस कंपनी के साथ मर्ज हो रही हूँ. If I'm acquiring that company, then my name will be, if A and B are combining together, then if A company is acquiring company B, then my name will still be as A. If we are merging, A and B companies are merging together, then they form some new name, that is C. Any doubt in these three mode of entries? Okay. Then other one is a takeover. This is a strategy whereby a company identifies a healthy unit with a strong brand name and network and bring it under the management of the another unit in order to become a leader in the field and the guarantee success. अब इस केस में क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया, कंपनी लाइक आई एम अ कंपनी ए, मैंने कंट्री बी में कंपनी आइडेंटिफाई करी जिसकी मार्केट इमेज बहुत अच्छी है. ठीक है, अगर उस कंपनी की मार्केट इमेज बहुत अच्छी है, आई मेड अ प्रपोजल टू टेक ओवर दैट कंपनी, कि मैं उस कंपनी को बाय कर रही हूँ. इस केस में दो चीजें हो सकती हैं, होस्टाइल टेक ओवर हो सकता है या फिर फ्रेंडली टेक ओवर हो सकता है. होस्टाइल टेक ओवर इज आई मेक अ कोट जो कि उसकी मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा है, then that will be the case of the hostile takeover. Then winner in this case will be called as a takeover tycoon. Well-known examples are the Hindujas who took over the Ashoka Leyland and Unilever who took over the Brookbond and Lipton. मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इफ आई एम कंपनी ए और मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ, यूनिलीवर इज एफएमसीजी कंपनी, ठीक है, उसने आइडेंटिफाई करा दीज टू प्रोडक्ट्स आर डूइंग वेरी गुड इन द मार्केट, तो मैंने क्या किया, उन दोनों प्रोडक्ट की कंपनी को ही बाय कर लिया. दीज आर द टेक ओवर टेक्निक्स. Then there are the turnkey projects. A turnkey project is a contract under which a company is fully involved from the concept to the completion. It covers from the supply of manpower, capital, and erection of plant and installation and commissioning up to a trial operations of the project. ठीक है, टर्नकी प्रोजेक्ट्स क्या है कि कंपनी ने एक दूसरी कंपनी को हायर किया फॉर सम प्रोजेक्ट, एंड जिस कंपनी को मैंने हायर किया है वो उसके पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी, राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट टू द कंप्लीशन. ठीक है, जो दूसरी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन पावर, कैपिटल, whatever the machinery I'm required to install in that project, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी कंपनी की आएगी. These are the turnkey projects. Turnkey projects are popular in the infrastructure projects like power plants अगर मेरे को सेटअप करना है, एयरपोर्ट सेटअप करना है, रिफाइनरी सेटअप करनी है, रेलवे लाइन सेटअप करनी है, हाईवेज या फिर डैम्स. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है मेरा हुंडई का, मित्सुबिशी का, एलएनटी का. इस केस में क्या होता है, कंपनी या तो बिल्ड एंड ऑपरेट करती है, बीओटी. बीओटी का इसमें होता है कि they'll build, like in the case of a highways, they build a highways, they operate it for some time, then they transfer it to the company which hired them. Then last mode of entry is a counter trade. Counter trades is divided into three categories. First is a pure barter. Pure barter में क्या है, goods and services are mutually exchanged between two countries depending on their bargaining strength. ठीक है, normally we are exchanging our goods and services. If I am selling a product A to company B in a country B, then company B will sell these products, some product in exchange of that product. Then second is a buyback. Buyback में क्या है, home country representative set up a project in the host country which does has a sufficient foreign exchange reserve to fully pay for the project to the supplier. Buyback के केस में मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने representative को hire करके एक setup host country में बना रही हूँ. Home country representative set up a project in the host country. ठीक है, जो जिसके पास sufficient reserves होंगे to pay off for my project. Then there is a counter purchase. Counter purchase is basically a net of transactions. इसमें क्या है, if company A from a country A supplies product X to country B,
ठीक है. Country B has a which has a surplus of product Y compensate by supplying it to company A. ठीक है. कंपनी ए जो कंट्री ए में ऑपरेट करती थी, उसने एक प्रोडक्ट एक्स सेल किया कंट्री बी में. ठीक है. अब कंट्री बी में एक सरप्लस प्रोडक्ट होता है विच इज अ प्रोडक्ट वाई. तो प्रोडक्ट वाई वो कंपनी बी ने कंट्री बी ने कंपनी ए को दे दिया. विच अब कंपनी ए को प्रोडक्ट वाई के लिए एक न्यू मार्केट मिली कंट्री सी. ठीक है. कंट्री सी जो एक प्रोडक्ट सेल करती है विच इज अ प्रोडक्ट जेड टू अ कंट्री डी. अब कंट्री डी कौन है? कंट्री डी विच हैज अ सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू पे फॉर इट. कंट्री डी देन कैन पे अ कंट्री सी. मतलब इसमें क्या हो रहा है? कंट्री वाई जो बी है, इट हैज अ सरप्लस ऑफ प्रोडक्ट वाई. वो प्रोडक्ट वाई उसने एक को ट्रांसफर किया, देन ए ने उसको सी को ट्रांसफर किया एंड सी ने उसको डी को ट्रांसफर किया एंड डी ने उसका पेमेंट किया सी को उसको पेमेंट मिला विच देन सी मेड द पेमेंट टू द ए. ठीक है. इससे क्या हुआ? कंट्री ए के पास फाइनली पेमेंट रिसीव हो गई फॉर द प्रोडक्ट दे आर डीलिंग इन. फॉर एग्जांपल पेप्सी इंटरनेशनल सप्लाइज राइस टू द साउथ अफ्रीका फ्रॉम इंडिया. ठीक है. लाइक पेप्सी क्या कर रही है? पेप्सी सप्लाई कर रही है साउथ अफ्रीका में राइस फ्रॉम इंडिया से. they are not manufacturing it's themselves. They are not growing it. उन्होंने क्या किया? इंडिया से बाय किया, then sell it to the साउथ अफ्रीका. फ्रॉम साउथ अफ्रीका उसने वहां से क्या प्रोक्योर किया? स्टील इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ राइस, collects and supply it to the Ghana. From Ghana, it procures a coffee and cocoa equivalent to the steel imports and sell them to the Canada, which has a sufficient foreign exchange reserves to pay for them. Then moving on, what will be the future of international business? International business का क्या future है? There will be a continued globalization. Then there is a emerging market dominance. And last one is the sustainability concern. तो continued globalization में क्या है? Expert predicts that globalization will continue to accelerate with further reduction in the trade barriers, advancement in technology, and the rise of the new economic power driving the increased international business activity. This means that जैसे जैसे ट्रेड बैरियर्स कम होंगे, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी एंड देयर इज अ राइज इन अ न्यू इकोनॉमिक पावर्स, दिस विल लीड टू अ मोर इंटरनेशनल बिजनेस एंड इट विल लीड टू अ मोर ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. इससे मतलब इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटी विल इंक्रीज. These are the factors, these are the main factor which affects international business activities: trade barriers, technology, and the new rising in new economic powers. Then the next one is the emerging market dominance. As the economies of developing nation continue to grow, they are expected to account for an ever larger share of global GDP, presenting both the opportunities and challenges for the multinational firms. ठीक है. दिस मीन्स कि जैसे जैसे लाइक इंडिया इज एन एमर्जिंग मार्केट. इंडिया जैसे जैसे ग्रो करेगा उसका मार्केट शेयर इन द टर्म्स ऑफ ग्लोबल GDP and a trade will increase. जो इसके लिए मतलब for the Indian market it is also an opportunity and a challenging situation. Then the third one is a sustainability concern. Increasing attention is being paid to the environmental and the social impacts of the globalization. Now, from the last few, from 2013, companies now, with the introduction of the new Companies Act, companies now focusing on growing on a sustainable basis. ठीक है. सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है कि they are manufacturing some product, but they are also manufacturing by keeping an eye on what will be the impact of their product on the environment and what will be the impact of their product on a social terms. ठीक है. Now this means that the company are paying attention to the environmental and the social impact of the globalization with a growing emphasis on a sustainable business practices and the CSR responsibilities. This means जैसे जैसे कंपनियां ग्लोबली अपने आप को स्टेब्लिश करती हैं, दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन देयर environmental and the social impact of their going global. Any doubt till now? Gaurav has asked,
ma'am, isn't a counter purchase, it's a kind of a barter. It's one of the category of counter purchase is also a barter. In this, if we are selling something, we are purchasing in return of it. Any other doubt? Okay. Then we'll move forward. Then comes the concept of globalization. अब globalization क्या होता है? Globalization is a cross border movement of goods, services, capital, information and people. क्या हो रहा है इसमें? हमारे गुड्स हो गए, हमारी सर्विसेज हो गई, हमारे कैपिटल हो गया, हमारे फंड्स हो गए एंड इंफॉर्मेशन हो गई एंड द पीपल ऑल्सो आर मूविंग अक्रॉस बॉर्डर. मतलब कोई मैं एक कंट्री ए में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ एंड आई एम ऑल्सो सेलिंग दैट प्रोडक्ट इन कंट्री बी. ठीक है, मैं कोई सर्विस कंट्री ए में प्रोवाइड कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैट कंट्री, आई एम नॉट लिमिटेड बाय बाउंड्रीज ऑफ माई कंट्री, मैं उस सर्विस को एक दूसरी कंट्री में भी प्रोवाइड कर रही हूँ. कैपिटल का केस क्या होता है? लाइक वी हैव डिस्कस आर एफडीआई. ठीक है, कि मैं एक कंट्री ए की इन्वेस्टर हूँ एंड आई एम इन्वेस्टिंग इन सम कंपनीज ऑफ द कंट्री बी. ठीक है, दिस इज द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ फंड्स, कि मैंने किसी दूसरी कंट्री के कंपनी में इन्वेस्ट किया. इंफॉर्मेशन, लाइक अभी तो इंफॉर्मेशन का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है. Lot of information are exchanged on a real time basis between the countries. Then people कैसे exchange, people कैसे cross border movement हो रही है? Lot of the people are going to the foreign country for studying, for establishing their businesses. This means the cross border movements of people. Globalization, it is a process of creating network of connections among the actors at the multi-continental distances, mediated through a variety of flows, including people, information and ideas, capital and goods. क्या कर रहे हैं globalization में? We are establishing a network. As that image in our slide shows, we establish a network across the continents. ठीक है. Then intensification of the cross-national economic, political, cultural, social, and the technological interaction that leads to the establishment of the transnational structures and the integration of economic, political, and the social processes on a global scale. मैं इस केस में what I am exchanging, इकोनॉमिक चीजें, पॉलिटिकल चीजें, कल्चरल चीजें, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चीजें. दीज आर मतलब ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट है द इंटरेक्शंस बिटवीन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर, सोशल एंड द टेक्नोलॉजिकल थिंग्स. इससे क्या होता है? व्हाट दिस लीड्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर्स. This means the integration of the economic, political, social processes on a global scale. These are the main 4 types of globalization. First globalization is an economic globalization. What does this implies? It implies the internationalizations of market for goods and services, the financial system, cooperation, and enhanced technology and the competitions. In a globalized economy, removal of obstacle to market access has led to a reduction in distance, transaction cost, time taken to conduct an international transaction. ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मेन मतलब है कि आई एम मूविंग माय मार्केट टू अ डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ द कंपनीज. ठीक है. Then comes the financial globalization. Financial globalization mainly concerned with the movement of capital. Growing integration of the financial market due to the liberalization of capital movement and deregulation, especially of the financial services. ठीक है, like financial services क्या क्या मतलब है? Like we are providing a banking services to any NRI customer. ठीक है, then we are not restricted by any NRI customer हो गया, foreign clients हो गए. We are not restricted by the boundaries of the country. फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं? मेनली फंड्स की बात कर रहे हैं. Then comes up
political globalization, linking of political system and the processes around the world. International business is increasingly conducted across jurisdictions, social, culture, physical boundaries of the sovereign states. Political globalization में क्या है? We are integrating our political systems with the other countries. Then there comes a cultural globalization. Cultural globalization में क्या है? Convergence of the culture across the world, which is evident by its deep impact on people and their lives. ठीक है? In this case, we are converging. We are in this case, cultures of the two countries are coming together. Like, for example, McDonald's has more than 30,000 local outlets serving millions of people every day in more than 100 countries. मतलब McDonald's एक foreign brand होते हुए भी they have established their local restaurants in the many countries, and they are also loved by the people of the other foreign countries. Ronald McDonald might is the second only to Santa Claus in the name of recognition for most children. They have penetrated in the foreign market in that level that every children of that country knows about it. Then what could be the possible drivers of globalization? How the globalization is mainly affected or how it can be increased? First is the declining trade barriers. जैसे जैसे हमारे trade barriers कम होंगे, till now anyone has any doubt? Is this subject there in BCom honors? Yes, it is also a subject of BCom honors. Any other doubt? Okay. Moving on, we were discussing drivers of globalization. First, the driver is a declining trade barriers. In this, we were talking about the reduction in the trade barriers. This means the reduction of tariffs, quotas, and the other barriers to international trade and the investments that has been a key driver of globalization since World War II. इसमें हम क्या कर रहे हैं? अपने main trade barriers को reduce कर रहे हैं. ठीक है. Then comes the technological advancements. Technological advancements में क्या मतलब है कि we are making an innovation in a technology, we are making an innovation in the communication, how the information is processed, and which अगर technological advancement होती है उससे मेरी manufacturing cost कम हो जाती है. ठीक है. अगर मेरी manufacturing cost कम हो गई है, then it will lead to it will increase my feasibility of conducting a business on a global level. Then there is the convergence of consumer taste. इसमें क्या है? As the people around the world are exposed to the global media and product, there is a trend towards the conversion of consumer preferences. Convergence of consumer taste का क्या मतलब है? जैसे जैसे like people are moving in a foreign countries, ठीक है? तो उस foreign country में अगर some people comes to India also, then in this case people their taste, consumer taste are combining. ठीक है. Consumer preference is also combining. पहले क्या होता था? They totally has a different taste. Now these tastes, their culture are on the verge of convergence. The convergence of consumer preference and the creation of global marketplace. Then there is a increased competition. अगर हम किसी global level पे trade कर रहे हैं, then अगर मैं अपनी local market में trade कर रही हूँ, who will be my competitors? My local shops which are established in my area. अगर मैं किसी और country में जाके trade कर रही हूँ, तो वहाँ के जो भी traders होंगे, वहाँ के जो भी manufacturers होंगे, they are also become my competitors. Then the globalization has exposed domestic firms to increased competitions from foreign rivals, forcing them to become a more efficient and innovative. अगर मैं किसी फॉरेन राइवल से डील कर रही हूँ, फॉरेन से मेरे को ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है, to sell my product in that market, I will have more innovation in my products, जिससे मैं ज्यादा अच्छे से ट्रेड कर लूँ एंड मैं क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूंगी in that case.
Globalization of markets. First is a merging of national market. Globalization has led to a merging of historically distinct and a separate national market into a single global marketplace. Globalization की वजह से क्या हुआ है, जो पहले अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग नेशनल मार्केट्स थी, they are now combining to form a single global marketplace. Falling trade barriers have made it easier for a firm to sell a product internationally. Then there is a convergence of consumer taste, like we have discussed earlier. Coca-Cola ho gaya, McDonald's ho gaya, Sony ho gaya. These are the brands which we think are the brands of the or of our country, but these all are the foreign brands. Then comes the emergence of global brands. Firm that offers a standardized product. City Group हो गया, City Banks हो गए, Citibank हो गया, Starbucks हो गया, IKEA हो गया. These are the some of the companies which are global brands. They have their manufacturing units, their centers, their shopping centers in worldwide in the countries all over the world. These global brands are helping to create and capitalize on these emerging global markets. Then last one, as we discussed earlier, is the increased competition. Globalization has exposed the domestic firms to the greater international competition, forcing them to become a more efficient and to have a more innovation in their product to retain their market share. Then how the globalization happens in terms of the production. ठीक है, फर्स्ट इज अ सोर्सिंग ग्लोबली. इन दिस केस कंपनी क्या कर रही है, कंपनी विल आइडेंटिफाई कि उसका रॉ मटेरियल कहाँ पे लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो सकता है. फर्स्ट इज अ सोर्सिंग ग्लोबली. फर्म आर सोर्सिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड to take the advantage of differences in cost and the quality of factors of production such as labor, energy and capital. जहाँ पे भी फर्म को किसी कंपनी ए को ये लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल हो गए अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे विल टेक इट फ्रॉम दैट कंट्री. Then second is the outsourcing or offshoring. Companies are outsourcing more of their value chain activities to the third party providers. जहाँ पे भी उन्हें लो कॉस्ट पे मिलेगा, they'll outsource their activities to that party. Offshoring these activities to the low cost locations to reduce cost and improve efficiency. Then third one is a global supply chain. Globalization of production has led to the development of highly complex international supply chains with the component and the services sourced from multiple countries. Globalization की वजह से क्या हो गया? There are now global supply chains, क्योंकि मैं अपनी firm, my firm is not restricted to my country only. Now I am trading in other countries only, also in the foreign countries. Because of this, now my supply chains is not restricted to my domestic market. Now my supply chain is open for the international market also. Then comes the benefit of international trade. First is the specialization. International trade allows a country to specialize in the production of goods and services. They can produce more efficiently and improving overall productivity. अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रही हूँ एंड आई एम डूइंग अ ट्रेड ऑन अ इंटरनेशनल लेवल, तो मैं क्या करती हूँ, आई एम स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आई एम गुड एट मेकिंग इट. मैं उसको ज्यादा अच्छे एफिशिएंटली बना सकती हूँ एंड एट अ लो कॉस्ट बना पाऊंगी इफ आई एम डूइंग अ trade on an international level. Then second is the economies of scale. If I have access to a global market, this enables a firm to achieve a greater economies of scale. अगर मेरे को low cost पे raw material available है, then it will reduce my per manufacturing cost per unit. Meaning I have a economies of scale in that case. Third is the consumer choice. International trade gives consumer access to a wider variety of products and services, improving choice and quality. अगर in today's scenario, firms are trading on a international levels, तो मेरे पास variety of option available है. ठीक है, if a variety of options are available in the market, then मेरे product को stand out करने के लिए मैं क्या करूँगी? I'll make a quality product. Then last comes the economic growth.
increased trade and the investment flows stimulate economic growth and development, benefiting both the developed and developing countries. अगर then if the I'm doing a trade in a foreign countries, उससे क्या हो रहा है? I'm catering to the international markets. It's a capital are moving from countries to countries, which help in the economic growth and the development. Any doubt till now? Okay, then we'll continue. Now we'll discuss some of the few rising emerging markets. First one is a China. Why are China is the rising emerging market? Because they have a rapid industrialization, larger consumer base, and the growing middle class. Okay? China, why? What are the factors which leads to the growth in China? First, there is a rapid industrialization. They are establishing industries on a larger scale, which leads to economies of scale, which reduces their production cost. They have a large consumer base, and their middle class population is also growing. Then comes India. India में क्या characteristics and why India is rising? Because of its demographic dividend, expanding service sector, and increasing purchasing power. Then comes Brazil. Brazil के पास they have a lot of abundant they have abundant natural resources. They have they are expanding now. They are expanding their manufacturing base, and they have now have a growing domestic demands. Then there comes Russia. रशिया में vast natural resources हैं. They are now transition to a market economies, and they are on the level. They are doing more in global integrations. As the economies of the developing nations like China, India, Brazil, Russia have grown, they have become increasingly important players in the global economies. These emerging markets offer significant opportunities for the multinational firms. Why we are discussing this emerging market? Because these markets are more pertinent for the international business, because they are now growing. So businesses are more likely, businesses are uh, uh, more attracted to establish their business in these countries. These emerging markets offer significant opportunities for the multinational firms, but also poses unique challenges in terms of navigating different regulatory environments, infrastructure, and consumer preferences. अब देखो, these countries, these emerging markets of opportunities तो दे ही रही हैं फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज को, बट उसके साथ साथ दे आर द चैलेंजेस, क्योंकि सबके सारी कंट्रीज के रेगुलेटरी अथॉरिटीज अलग होते हैं, उनके अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं. दे हैव देयर डिफरेंट बैरियर्स, अलग अलग उनके रूल्स होते हैं ट्रेड करने के. ठीक है, तो दीज आर द चैलेंजेस, सम ऑफ द चैलेंजेस विच आर faced by the foreign countries to establish their manufacturing and the production capacity in emerging markets. Then we'll discuss the importance. What is the importance of international business? International business help in, we have already discussed it, but very briefly we'll discuss it again. First is accessing new market, achieving economies of scale, fostering innovation, and boosting economic development. Now, then comes the, any doubt till now? Now we are set. Yes, Dhruv, this is our first revision class of international business, and we are starting with unit 1 only. We have scheduled 5 classes, and one in each class we'll discuss 1 unit of your syllabus. And you have any doubt but relating to that unit, you can discuss it. You can post it in your chat box. We'll discuss it right now. Sumaya, can you tell me the topic of that slide, so that it will be easier for me to share it with you?
Dhruv, I'll recommend a book in your last class or in the next class, because I'll go through some books and I'll find out which will be the more suitable with your syllabus. Where is this the slide you are talking about, which talks about the international introduction to international business? Vishaka, these all slides are your from SLM. So if you study from your SLM, you'll get it all. And you, if you have any doubt, we can discuss in your class. Any other doubt or any other question you have? Recording will be shared after this class is over. Any other doubt? Then we'll start a new topic. Okay, now we'll start your new topic, which talks about the system which affects the international business. Before starting the systems, we'll discuss what is the scope and importance of international business. We have already discussed it, but this is the second chapter of your SLM. We'll quickly discuss it. Scope. What is the scope and importance of international business? The rapid growth of international business over the past 2 decades has been one of the most dramatic and the significant world trends. जैसे इंडिया के केस में if we see after 1991 जब से liberalization हुआ, that is the benchmark. उसके बाद से there has been a tremendous increase in the global trade. ठीक है, market has become truly global for the most goods and services, financial instruments. World product trade has expanded by more than 6% annually since 1950, outpacing the growth of output. These are the million numbers which indicates how much the world trade has increased from 1950. This pervasive globalization has made it increasingly difficult for any country to avoid substantial external impact on its economy. इसका मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन इज इंक्रीजिंग इन सच अ वे कि अगर मैं एक कंट्री एक ही मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, और मैं इतनी रिस्ट्रिक्टेड हूँ दैट आई डोंट वांट टू गो ग्लोबल और आई डोंट वांट टू इम्प्रूव माय प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्या होगा, कोई फॉरेन कंट्री की कोई कंपनी दैट एस्टैब्लिश देयर बेस इन माय कंट्री और वो मेरे से अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ लो कॉस्ट सेल करेगी. इन दैट केस माय बिजनेस विल बी अफेक्टेड. ठीक है, तो इस केस में क्या है, इन इन कॉन्सोनेंस ऑफ दैट कंपनी मेरे को भी अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करना पड़ेगा इफ आई वांट टू स्टे इन दैट मार्केट. ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया है एंड टू स्टे इन द मार्केट कंपनीज को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ेगा देयर प्रोडक्ट. दिस pervasive globalization has made it increasingly difficult for any country to avoid substantial external impact on its economy.
Smaller and more open economies have long since given up the illusion of domestic policy autonomy. जो छोटी एंड ओपन इकोनॉमीज दे हैव गिवन अप कि वो अपने ही क्लोज्ड मार्केट में ऑपरेट कर लेगी. नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल. इवन द लार्जेस्ट इकोनॉमीज लाइक यूएस आर नाउ सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द ग्लोबल इकोनॉमी. ठीक है, मूविंग ऑन. नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस. अब इंटरनेशनल बिजनेस अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं देन देयर आर मोर कॉम्प्लेक्सिटीज. ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बट दे आर ऑन द अदर हैंड दे आर आल्सो मोर कॉम्प्लेक्स. दे आर मोर बैरियर्स टू इट. First unique challenge, the study of international business focuses on the particular problems and opportunities that emerge when a firm operates more than one country. क्योंकि अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम नॉट डिस्ट्रिक्टेड माई ऑपरेशन टू वन कंट्री. मैं डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेड कर रही हूँ. ठीक है, अब मैं डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेड तो कर रही हूँ बट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग रेगुलेशंस होंगी, उनके कल्चर्स भी अलग अलग डिफरेंट होंगे. ठीक है, तो मेरे को अगर इफ आई एम सेलिंग माई प्रोडक्ट इन दैट कंट्री तो मेरे को अपने प्रोडक्ट को सबसे पहले उनके कल्चर के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा. सेकेंडली, अगर मेरे को उस मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो देन आई हैव टू गेट अ अप्रूवल फ्रॉम देयर गवर्नमेंट. आई हैव टू comply with their regulations. ठीक है, then only it will be possible for me to do a business in that country. The international environment is highly uncertain with the ambiguous, contradictory and rapidly changing rules in contrast to the domestic markets. अब अगर मैं किसी दूसरी कंट्रीज में लाइक आई एम इन कंट्री ए, मैं कंट्री बी के साथ भी ट्रेड कर रही हूँ, सी के साथ भी ट्रेड कर रही हूँ, डी के साथ भी ट्रेड कर रही हूँ, तो अगर वहां के जो एनवायरमेंट है मैं उससे इतनी फ्रेंडली तो नहीं हूँ बिकॉज आई एम करेंटली ऑपरेटिंग इन कंट्री ए. ठीक है, अब लोकली तो मेरे को पता होगा डोमेस्टिकली लोकली क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती है बट उस कंट्री में कुछ भी चेंजेस होंगे वो मेरे को आई वोंट बी एबल टू गेट अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. उस कुछ भी अगर वहां पे रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं इट विल टेक सम टाइम टू रीच मी. ठीक है, तो अगर कोई रूल चेंज हो जाता है तो आई हैव टू अडेप्ट टू दैट रूल. ठीक है, these are the some unique challenges that I have to face if I am operating in different foreign countries. Then there is a strategic consideration. Firm engaged in the international business must incorporate a global perspective into guiding principle, addressing key strategic choices around marketing, sourcing, labor management, ownership, finance, law, control, and public affairs. This means कि अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में establish कर रही हूँ या फिर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी किसी फॉरेन कंट्री में establish कर रही हूँ तो हर लेवल पे I have to adapt at every level. मुझे अपने हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे लाइक इन मार्केटिंग, लेबर मैनेजमेंट, ओनरशिप, फाइनेंसेस हो गया, कंट्रोल हो गया, लॉ हो गया, पब्लिक अफेयर्स हो गया. इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ माय ऑपरेशंस आई हैव टू मेक सम स्ट्रेटेजिक चेंजेस. Then there are the increased complexities. As a firm move deeper into the international market, decision making become more complex. ठीक है, क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाती है बिकॉज व्हेन आई एम ट्रेडिंग इन अदर कंट्रीज देयर आर वेरियस लेवल इन्वॉल्व्ड, देयर आर मोर रूल्स, देन आई आल्सो आई एम डीलिंग इन अ डिफरेंट करेंसी. ठीक है, उनके लीगल मैटर्स अलग होते हैं, देयर आर डिफरेंस इन देयर मार्केटिंग strategies will be my marketing strategies will be different if I want to sell my product in a different countries. There will be a different on the economic, political and the cultural fronts which leads to the diverse geographic and the demographic factors. Any doubt? Soumya has asked me to share syllabus of international business. Soumya, it is available on SOL site. You can take it from there. Dhruv, I didn't get you. Language difficult हो रही है, मतलब you are not getting what I am explaining.
Okay, if you are not getting what I am explaining, then you can ask me again to explain it. Okay, I'll do it again. Till now, everything is clear. If you have any doubt in any topic, then ask me right now. Any doubt, anyone? Okay. Now we'll discuss a system which can affect which can have an impact on your international business. ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हमारा आता है political system. The now political system can be of two type. First is a collectivism and the second one is a individualism. Collectivism क्या है? In this political system that emphasizes the primacy of the collective goals over the individual goals. इस केस में क्या है कि I'm focusing on the collective goals of the countries, not on the individual goals. In such a system, an individual right may be restricted for the perceived good of the society. ठीक है, मतलब मैं एक सोसाइटी लेवल पे गोल्स क्रिएट कर रही हूँ. आई एम वर्किंग ऑन अ कलेक्टिव लेवल, नॉट ऑन द इंडिविजुअल लेवल. Communism and the social democracy are the two variants of the collective political ideology. Next come the individualism. This is the opposite of the collectivism that stresses on the importance of the interest of the individual. ठीक है, इसमें क्या है? I am focusing on the interest of the single individual over the interest of the state. Individualism argues that individual economic and the political freedom should be the foundation of the society. Individualism क्या state करता है कि I should focus on the individual interest first, then before focusing on the interest of the state. Then comes the difference between a democracy and a totalitarianism. This means these two works on the opposite end. Democratic system have a safeguard like we have in India, like we have a free election, freedom of expression, and the independent judiciary. However, totalitarian regimes restricts the individual liberties and concentrate power in the hand of a single party or a ruler. ठीक है, like India के case में we are a democratic country, then opposite of it that will be a totalitarianism. Then comes a various economy system. Economic system में there are main three economic system. First is a market, command, and the mixed economy. And first, what is a market economy? In a pure market economy, all productive activities are privately owned and production is determined by the interaction of supply and demand. Consumer drives the economy through their purchasing patterns. Market economy में क्या है कि मेरी market में most all the players are private. सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं और प्रोडक्शन मेरा किस बेसिस पे हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. कि मैं किस बेसिस पे अपना प्रोडक्शन जज करूंगी? मेरी प्रोडक्ट की जितनी मार्केट में डिमांड होगी उसके बेसिस में अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूंगी. ठीक है, तो my production is dependent on the purchasing power of the consumer. This is the market economy. Command economy में क्या है? In a pure command economy, the government plans the goods and services produced, the quantities and the prices. Command मतलब they are controlling it. Government has the control over the production of goods and services. They are controlling its quantity, its price also. In this case, all businesses are state owned with the goal of allocating resources for the good of the society. कमांड इकोनॉमी के केस में क्या होता है? गवर्नमेंट के पास सारा कंट्रोल होता है. सारे गुड्स की जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, क्योंकि और गवर्नमेंट का फोकस क्या होता है? गुड ऑफ सोसाइटी. ठीक है, कमांड इकोनॉमी के केस में जो भी क्वांटिटी है, जो भी प्राइस है, जो भी प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं दैट विल बी डिसाइड बाय द गवर्नमेंट ओनली.
Then comes a mixed economy. Mixed economy क्या होता है? It's a mix of both market and a command economy. A mixed economy has an element of both market and a command system. Certain sectors are left to private ownership and a free market, while others has a significant state ownership and the government planning, like we have in our India. Some of the sectors are majorly majorly government owned, and other sectors we see a lot of our private players. So India is a mixed economy, जहाँ पे बहुत सारे institutions, बहुत सारे organization हैं जो government owned है, ठीक है, and बहुत सारे companies हैं जो फिर privately owned है, and they both come work for the betterment of the society. Any question? Okay. Then we'll move forward to the legal system. Ab legal system mein there are three laws. First is a common law, civil law, and theocratic law. Common law system found in countries like US, UK, and they are based on the tradition, precedent, and a custom. Judges have a flexibility to interpret the law and create a new precedents. Common law के cases में क्या है? They are not restricted. ठीक है? Judges इस case में they can have a interpretation in their own way. ठीक है? Or on the basis of that they can create a new precedents or the new rules. ठीक है? Then comes the civil law system. Civil law is prevalent in the countries like Germany and France and are detailed legal codes. जहाँ पे detailed legal codes होते हैं, and judges have a less flexibility and can only apply law, not interpret it. ठीक है? Civil law के cases में क्या है कि I'm restricted by what is written in the books of law. ठीक है? I can't make any changes to it. ठीक है? I cannot interpret in my own terms. उसमें जैसा लिखा है, जैसे भी कोड्स मेंशन है, I have to follow it. ठीक है? इस केस में इस सिविल लॉ के केसेस में there is no liberty. Then comes the theocratic law, theocratic legal system, such as the Islamic Sharia law. These are based on the religious teachings and the scriptures. These foundations cannot be changed, though scholars debate modern applications. Theocratic laws में क्या है? These are on the basis of the religious practices of the people, like a Islamic Sharia law. Then comes the political risk in the international business. Political risk किस type का हो सकता है? This also we can also call it a political system. First, in this first risk can be a ownership risk. Ownership risk is related to the government's ability to confiscate, expropriate, or domesticate a firm's property and asset without fair compensation. Ownership risk में क्या है कि अगर मैं एक manufacturing unit establish करी मैंने किसी foreign country में, so there may be a chance कि जो वो उस country की government है, in a worst case scenario they can confiscate my property, they can confiscate my asset, and उसके बदले वो मेरे को कुछ भी नहीं दे. मतलब इसमें क्या कर रही है दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट मेरे एसेट्स को होल्ड कर रही है और उसके अगेंस्ट वो मेरे को कोई फेयर कॉम्पेंसेशन नहीं दे रही है. ठीक है? नेक्स्ट कम द ऑपरेटिंग रिस्क, रिस्क ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विद अ फर्म्स ongoing operations such as through regulation, sanctions and other policies. अब और political risk system में क्या आ सकता है? They can impose some of the regulations and sanctions on me, on my operating units. ठीक है? जैसे कि मैंने किसी foreign country में कुछ operating units establish करी तो वहाँ की government to hinder my business practices वो क्या कर सकती है? अपने regulations change कर सकती है, new policies introduce कर सकती है, मेरे trading पे sanctions लगा सकती है, मेरी country पे sanctions लगा सकती है. ठीक है? This will be the operating risk in the international business. Then comes the transfer risk, risk of government imposed limitation on the ability to transfer funds, capital and profits out of a country. इस केस में क्या है? This is a case in which इस केस में रिस्क क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया ओनरशिप में क्या था? They are restricting my assets. They are
they are holding my assets. ठीक है, operating risk में क्या है, they are hindering, creating a hindrance in my operations, business operations. Transfer risk में क्या है, when I am transferring my funds to my own country or a home country, उसमें government restrictions create कर दिया है. Government has imposed limitation on that fund, on transfer of funds. ठीक है, मतलब प्रॉफिट्स पे, कैपिटल की फंड की मूवमेंट पे गवर्नमेंट ने रिस्क लिमिटेशन इंट्रोड्यूस कर दिया है. Legal risk in international business. Legal risk में क्या हो सकता है, that can be a strict standards, high standard for the product safety, workplace safety, environmental protection can increase the legal risk and the compliance cost. Legal risk कैसे increase होगा मेरा, कि जब किसी foreign country की government बहुत सारे standards मतलब स्टैंडर्ड्स हाई कर दे या फिर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दे. ठीक है, देन कम्स द डैमेजेस. फेलियर टू कंप्लाई विद द लॉ कैन रिजल्ट इन अ वेरी हाई फाइनेंशियल डैमेजेस, फर्दर एलिवेटिंग अ legal risk. ठीक है, अगर if I'm not following their standards, what will they do? They'll charge penalty to me. ठीक है, which could be a higher financial damage for my company. In etiquette law, in case of a lack of well-established laws to regulate a business practices and protect a property rights, increases the legal uncertainty. अब if I'm doing a trade in some country जहाँ पे बहुत ही haywire law है, मतलब they are not established in a well mannered, or they are not detailed, they are not having a detailed codes. ठीक है, उस केस में there will be a risk for my property, there will be a risk on my manufacturing units, there will be a risk for my product I am manufacturing. Then comes a cultural risk. In this case, first we have to understand why a cultural understanding is important for the international business. First is the language. If I'm doing a trade with some other country, with some other foreign country, first difference that I will be encountering will be a language. Language is a critical element of culture, providing access to the local society and influencing a business communication. ठीक है, अगर लैंग्वेज इज द फर्स्ट थिंग जिसमें वो डिफरेंस क्रिएट होगा. दिस एंड लैंग्वेज अफेक्टेड एवरीथिंग. थ्रू बाय अ लैंग्वेज माय लोकल, if I get the language of the other country, my local access to a local society will increase. And language से क्या affect होती है, my business communication is affected. ठीक है, कि मेरे को उस foreign country में कैसे market करना है, how I'm doing the marketing, how I will be doing my advertising in that country. तो उस advertising को क्या affect करेगा, उस country की language, because I have to advertise in the language of that country only. Then comes the religion. Religious beliefs and the practices can have a profound impact on the cultural norms, values and the customs. ठीक है, अब उस कंट्री के क्या religious belief है, ठीक है, उस जो भी वो religious belief होंगे, it will ultimately, it will also have an impact on the manufacturing and how I am selling my product in that country. Then comes the customs. Customs are the manners, etiquettes, and the cultural customs that can vary significantly across the countries and must be understood. If I'm sending my staff to the other countries, if I'm sending my employees to the other countries to work, okay, so in that case, my employees should be should be made aware about the manners and the etiquettes which are followed in that other country, because it will significantly affect my production capacities and my establishing of business in other country. Then comes the education system. Education system and the level of education in a country can shape their cultural attitudes and the behavior. उस foreign country का level of education कैसा है, it will also impact my production, it will impact my marketing strategies. ठीक है, तो उन सबको ध्यान रखते हुए मेरे को अपनी वहाँ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, मेरे को वहाँ के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी. These are the main 4 points that I have to keep in my mind if I want to establish a firm in a foreign country, or if I want to do a trade in a foreign country. There are various dimensions to the culture. First is the individualism and the collectivism. This we have already discussed, the degree to which individuals are integrated or into a groups. ठीक है,
Power distance, the extent to which a power is distributed unequally. Uncertainty avoidance, tolerance for the ambiguity and the uncertainty. Masculinity and the femininity, distribution of emotional roles between the genders. Any doubt till now? Dhruv, are you talking about the dimension of culture slide? Okay, I'll explain it again. Because these are the dimensions of culture. These are what does the dimension indicate कि culture किस किस चीज से affect हो सकता है, ठीक है? So first is the how your culture, how your society is. Is it a individualism society or a collectivism society? And वो क्या indicate करता है या whether you are focusing on the individual goals or the goals of the society. That's the main difference. Then comes the power distance. How power is distributed. ठीक है? The extent to which a power is distributed unequally. कि, like in the countries, some of the countries, rich people have more power and the poor people don't have any power. So that is the difference I have to understand before marketing my product or a trade, before manufacturing manufacturing or establishing a production capacity in a foreign country. Okay, next comes the uncertainty avoidance. Then what could be my tolerance for the ambiguity and the uncertainty. कि अगर उस कंट्री में कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, अगर कुछ अनसर्टेन सिचुएशन अराइजेस हो सकती है, हो जाती है, व्हाट कुड बी अ uncertain avoidance in that case. Then comes the masculinity and the femininity, how the emotional roles are distributed in that society between the genders. ठीक है? Then comes our topic of acquiring cultural knowledge. Now in this case we'll discuss how I can acquire a cultural knowledge of the other country. First is the objective knowledge. Objective knowledge में क्या है कि on the basis of the factual information I get to know the culture of the other countries. Dhruv, is it clear to you now? Okay. फर्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव नॉलेज. ऑब्जेक्टिव नॉलेज में क्या है कि जो भी फैक्चुअल डेटा अवेलेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम जजिंग द कल्चर ऑफ द अदर कंट्री. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर, ट्रेड, कस्टम्स एंड द पैटर्न कैन बी ऑब्टेन थ्रू अ रिसर्च, एजुकेशन एंड द कम्युनिकेशन. That will be called as my objective knowledge of the culture. Then comes the experiential knowledge. इसमें क्या है? On the basis of my experience, I am making my knowledge about the culture. Deeper and the contextual knowledge and understanding of the culture can only be gained through a direct involvement and the immersion in that culture. जब मैं उसके कांटेक्ट में उस कल्चर में रहूंगी, then only I can get an experience of that culture. That on the basis of that uh, on the basis of that experience, I'll form my experiential knowledge of that culture. Then comes the interpretive knowledge, the ability to fully appreciate the nuances and the meaning behind the different culture elements. Requiring interpretive development over the time. ठीक है? Interpretive मतलब कि I have the ability कि over the period of time I'll get an ability to understand that culture. कि what will be the difference, how that people are going to react to my to the product I'm going to introduce in that market. That is the interpretive knowledge.
Any doubt in this slide? Any doubt till now? Okay. Now I'm navigating a cultural differences. I'm identifying the cultural differences that could be possible. First is the standardization versus adaptation. Firm must balance the desire for the global standardization with the need to adapt to the local preferences and norms. ठीक है, देखो फॉर्म जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दे वांट दैट कि उनका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो जाए, बट दे कांट मेक अ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट because it will not help in selling out their product in a foreign markets. For to sell your product in a local foreign markets, you need to adapt your product according to their cultural preferences and the norms. So there is a very pressing need for the firms to find a right balance between the standardization and the adaptation. वो क्या करेंगे, अपने रूल्स स्टैब्लिश करेंगे कि कहाँ तक उनका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज देगा एंड कहाँ तक दे कैन अडेप्ट टू द लोकल मार्केट दे आर केटरिंग टू. ठीक है, तो फर्स्ट इज द स्टैंडर्डाइजेशन एंड द अडेप्शन. Then overcoming a cultural myopia. Managers must actively work to overcome their cultural biases and the preconception in order to fully understand and appreciate the perspectives of the other cultures. मतलब कि if I'm manufacturing some product in country A and I want to sell my product in country B, तो उस country B के culture को without any biases I have to adapt to that cultures. कि मैं किसी preconceived notion के साथ वहां पे अपना product नहीं sell कर सकती. And I have to understand their culture, I have to appreciate their culture, then only I will be able to sell my product in that market. Then comes a developing culture competence. Building deep cultural knowledge for the objective and the experientials as well as a strong interpretive skills allows the firm to navigate cultural differences and thrive in the global marketplace. इसमें केस में क्या है कि by after understanding their culture, after having a deep knowledge about their cultures, मैं क्या कर रही हूँ, अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर रही हूँ, अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर रही हूँ, so that I can have my global presence and I can have an acceptance of my product in that market also. Then comes how can I analyze the international business environment. This is the sum up slide because we have already discussed the various system that affects the international business. ठीक है, हमने discuss किया economic system, discuss किया political system, discuss किया हमने cultural differences discuss कर लिए. Then that comes how we can analyze the international business environment and which affects how I can trade in a foreign countries. Lavanya has asked me to is my slide visible to everyone? I'm on the slide analyzing an international business environment. Is this slide visible to everyone? Abhishek, it is visible for all others. Then there will be might be some issue with your system. Lavanya has asked me to explain again standardization and adaptation. देखो standardization and adaptation में क्या difference है कि मेरे को दोनों में mid point ढूंढना पड़ेगा कि मेरे को अपना product कहाँ तक standardize रखना है and कहाँ तक उसको adapt करना है.
ठीक है, स्टैंडर्डाइज मतलब कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ माय प्रोडक्ट, कि वो तो रहेंगे ही रहेंगे, एंड व्हाट आर द ऑल अदर्स थिंग्स दैट आई कैन इम्प्रूव इन माय my product, so that I can cater to the foreign markets according to their cultural acceptance. Lavanya, now you got it? Okay. So till now we have discussed the macro factors which can affect my international business practices. Okay, then comes the micro factors which could affect my business. The micro factors consist of the immediate actors that directly impacts a company's performance. ठीक है, micro factors में क्या होते हैं? These are the small numbers on a micro levels which affects my company's performance. This could be a supplier, customer, competitors, and the market intermediaries. Careful analysis of this environmental factor is crucial, as there can be a significantly different between different significantly different significantly between firms even in the same industries. माइक्रो फैक्टर्स में मेनली मेरे क्या आ रहे हैं? सप्लायर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, मार्केट इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं. ठीक है, एंड दीज कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, मेंटेनिंग अ रिलायबल सप्लायर रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग अ कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, मॉनिटरिंग अ कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज, and leveraging effective marketing channels are the key considerations which I have to take into account when I am making a decision on the micro level. Companies must design their internal variables such as a market mix to best navigate the opportunities and threat present in the specific micro environment. तो माइक्रो एनवायरमेंट में मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ कि मेरे कस्टमर्स, मेरे सप्लायर्स, मेरे रीसेलर्स, मेरे कॉम्पिटिटर्स एंड मेरी मीडिया, हाउ दीज 4-5 factors are affecting my business activities. On the micro level, I have to analyze these factors because these factors can have a significant impact on the performance of my company. Any doubt in micro environment? Okay, so this is your first unit. If you have any other doubt in this, Abhishek, should I explain it again? Acha, you missed this. Okay, I'll explain it again. In the micro environment, we are focusing on the micro level things. First is my supplier, customers, competitors, and the market intermediaries. Okay, to operate, I have to I have to uh, uh, emphasize or have a key observations on these factors, because these factors can affect my performance. ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं इसमें? सप्लायर्स है, कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, मार्केट इंटरमीडिएट्स है. तो मेरे को क्या करने हैं? फर्स्ट, मेंटेनिंग अ रिलायबल सप्लायर्स, क्योंकि अगर मेरे सप्लायर ने कहीं पे भी मेरे को डिच किया, कहीं पे भी मेरे को डिनाई कर दिया अपने रॉ मटेरियल सप्लाई करने से, then it could affect my production capacities. Then comes the understanding customer needs and preferences. So that is the basic thing I have to do to operate any business, कि मेरे कस्टमर की क्या नीड है एंड प्रेफरेंसेस है, अकॉर्डिंगली आई विल मेक माय प्रोडक्ट. Then comes the monitoring the competitor activities. So what my competitor is making, or what my competitor is doing, what my competitor is following is what marketing strategies my competitor is following. So I have to monitor it carefully, क्योंकि accordingly I have to adapt my product. Then comes the leveraging effective marketing channels. कि मेरे पास क्या क्या marketing channels available है, what could be a new marketing strategy I can follow to increase my customer base. ठीक है, these are the main factors जो मेरे को ध्यान रखने हैं on the micro level. ठीक है, to increase my profitability, and these factors can also have a significant impact on performance of my company. Abhishek, now it is clear to you?
Okay, now this covers your unit 1. If you have any other doubt, then we can discuss it right now pertaining to unit 1 only. Any doubt, anyone? Okay, then we can end today's class. You go through your syllabus of the unit 1. If any topic is left, I have covered all the topics mostly. If any topic is left, we can discuss it in your next class. And if you have any doubt pertaining to any topic and any topic is not clear to you, then we can also in the starting of the next class, we can discuss it first, then move on to our second unit. Okay, should I end this class if no one has any doubts? Because I can't tell you an important question. Everything is important because I'm not making your paper and I don't know what can come in your paper. Okay, so basically you focus on the factors that can that are mainly affecting on international business. What could be a what are the various topic mentioned in your syllabus? Discover all those topics, have a basic understanding of it, then you will be able to write it or explain it in your paper. Okay, then I'm ending this class.